परी पटेल, राधे राधे भैया, वेलकम है आपका। राधे राधे। परी पटेल, राधे राधे भैया, वेलकम है आपका। और बताइए जी, कैसी हो? बढ़िया हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया, ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? बारिश बहुत हो रही है भाई हमारे तरफ तो। पूरी नवरात्रि बारिश में ही चले गई। हमारे इधर भी हो रही है बारिश और बहुत नुकसान कर रही है। हाँ, ऐसे समय में क्या है, सबके वो लगा रहता है ना खेतों पे, तो फलने फूलने का सीज़न रहता है, सब नुकसान हो जाता है। हमारे इधर भी बहुत हो रहे हैं। इधर भी बहुत, बता रही हूँ ना, डेली कभी सुबह नहीं तो शाम, नवरात्रि पूरा इस साल ऐसे ही निकल गया बारिश में। क्यों बार बार पर आ चुकी है? हाँ हाँ, धान फलने लगा है तो वजह हो गया है तो पानी की वजह में और हवा में आंधी हो रही है, जमीन में गिर रहा है। अच्छा, पुणे से रह जाएगी, जो गिर गई है वह पकने से रह जाएगी। अम, रविशंकर, हाय सिस्टर। हेलो रविशंकर, वेलकम है भैया जी आपका। और कैसे हो आप? राधे राधे, राम राम, जय जोहार आप सभी को सरिता की लाइव में। आप सभी का स्वागत है मेरी लाइव में। हवा पानी से गिर जा रही है। ठीक हाँ सिस्टर। अच्छा, हम भी ठीक, मतलब महू ठीक हो बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हो भैया? भाई सब चुप कैसे हो गए इतने सारे लोगों को? प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए और साथ साथ कमेंट करके बताइए भी। पापा की पई, राधे राधे भैया, राधे राधे। रायपुर जिला से? रायपुर जिला कहाँ? रायपुर जिला में कहाँ से? रायपुर तो मेरा मायका है। राधे राधे। अच्छा, तिल्दा नहीं हो रखी हुआ? हाँ, नाम ये पता है मुझे, तिल्दा नहीं हो रहा। अभी कब से नहीं हुई है बारिश जी आपके इधर? डेली हो रही है भैया, इधर बारिश डेली हो रही है। पूरी बताई ना आपको मैं, नवरात्रि पूरी ऐसे ही निकल गई, डेली सुबह नहीं तो शाम, सुबह नहीं तो शाम बारिश हो ही रही है। अभी पता नहीं, एक बार ऐसे ही कुछ साल पहले हुआ था ना, दिवाली तक बारिश हो ही रही थी। वैसे इस साल भी ना हो जाए। हमारे इधर भी डेली हो रही है। अच्छा, और रवि भैया आप बताइए।
खास तेला पहली बतागा चल। दिखाओ तो दीदी तो मोबाइल टाइमर लगाना, टाइमर बाद में लगाना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गिर रहा है जी। अच्छा, और जी बिहार तरफ तो महीने 1.5 महीने में हो रही है। बिहार में घर में बारिश नहीं हुई है। अच्छा, गोभी आलू। अच्छा, गोभी आलू की सब्जी। आज मैं बना हो राजमा के सब्जी, राजमा आलू के, लेकिन कल बना रहे हो महुआ गोभी आलू के सब्जी। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। हाँ, ये पता है भैया, छत्तीसगढ़ तो पहले था, फिर उसके बाद में अलग हो गया ना ये। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। और आपका बच्चे बच्ची सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, मतलब सब बच्चे नहीं, दोनों बच्चे मेरे ठीक है। आप क्या सब्जी बनाए हो सिस्टर? भैया मैं ना आज राजमा आलू की सब्जी बनाई थी। आपके इधर दुर्गा जी काली जी रखती है या नहीं? हाँ रखते हैं ना, बहुत भीड़ हमारे साइड तो, बहुत ज़्यादा रौनक है अभी। डेली सब घूम रहे हैं इधर से उधर। मैं ही अभी नहीं गई हूँ, एक दिन बस गई हूँ, एक दिन। बच्चे परेशान कर रहे थे ना, मम्मी ले चलो करके, तो सिर्फ एक दिन गई थी। हवन कब है आप लोगों के साइड? अष्टमी, कई लोग बोल रहे हैं ना 2 दिन है, 2 दिन पड़ रहा है करके। राधे राधे। कैसे रवि भैया आप बताओ, अष्टमी कब मना थे आपके साइड? इधर गुजरात तरफ नहीं है, बड़ा मनाते हैं वो लोग जो दुर्गा में। अच्छा, कल। अच्छा हाँ, कल बोल तो रहे कल है करके, फिर कई लोग बोल रहे परसों भी है करके, अब पता नहीं। अष्टमी आज है जी। वही तो पता नहीं भैया, आप बोल रहे हो आज है, कई लोग बोल रहे हैं कल है करके। इधर हमारे साइड ना आज सप्तमी मनाया है, कल है अष्टमी। हाँ इधर छत्तीसगढ़ में देखो, अभी वो भैया बताए ना कल है। इस
साल 10 दिन का है। हाँ, इस साल ना 10 दिन का है दुर्गा दुर्गा माता इस साल 10 दिन का है। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। अच्छा, आप मन के ससुराल कहाँ है? मोर ससुराल भैया भिलाई है, और मायका ना रायपुर हरे, और भिलाई अभी जहाँ में हो ना, वो रायपुर भिलाई हरे। जानथो ना भिलाई, भिलाई तो आज जात हो हुए थी रायपुर भिलाई। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। रात को चलाती हुई छोड़ती हूँ, लाइट पे वाला बंद कर देती हूँ। नहीं भैया, छोड़ देती हूँ, हाँ चलते रहता है। राधे राधे। बहुत मुश्किल से एक चैनल तो मेरा ये हो गया भैया, अब कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से हो जाए। यादव जी, जय माता दी। भाभी लाइट नहीं है क्या? नहीं भैया, इधर लाइट नहीं है हमारे साइड। राधे राधे। रायपुर में कुछ रिश्तेदार रहते। अच्छा। कुछ साल पहले गे रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत कम आना जाना होते मतलब ना आपके यहाँ रायपुर में? बारिश से अब नहीं आ रही है क्या? कल भी लाइव थी। लाइव पर लाइव थी, लाइव पर मतलब। हाँ। अच्छा। मोर तो मैके हरे भई हुआ मतलब मोरिया मैके भी पहली वहाँ रही से नया पारा राजिम जानते हो आप मना? नाम सुने हो नहीं? हाँ, तब मोर असली मैके वहीं हरे नया पारा राजिम। हाँ, फिर अभी का है ओ मन, हाँ हमारे यहाँ माँ बाबू जी मन का है यहीं शिफ्ट हो गए ना रायपुर में, तो रायपुर में रहते। मेहमान आए थे जब से, आज ही आ रही हो लाइव पर? नहीं भैया, मैं कल आई थी पर आप नहीं आए थे, कल मैं आई थी। अच्छा, गुजराती आवे छे ना? बिल्कुल हमको ना आवे छे भैया गुजराती नहीं, गुजराती नहीं आती है मुझे। कल हमको सरकारी नींद लग गई। अच्छा, मतलब जल्दी नींद लग गई थी आपके लाइव आने से पहले। हाँ, कल मैं आई थी देव। अच्छा, डंगनिया में बड़े पापा के
की है ससुराल। अच्छा डंगनिया। डंगनिया हाँ पता है। इधर का एरिया मैं जानती हूँ, उधर का नहीं नहीं मतलब एती के एरिया मतलब जानता मैं, ओती के नहीं जानो। राधे राधे। राधे राधे भैया। डंगनिया पता है, मोर दीदी की देवरानी रहते डंगनिया में। राधे राधे। लाइफ इज गुड। हाय दीदी। हाय। हेलो वेलकम है गर्ल। कैसी हो तुम? राधे राधे। राधे राधे भैया। और गुजराती भाई साहब आप कहाँ चले गए? राधे राधे। राधे राधे। अच्छा आप कहाँ से हो पहले ये बताओ मुझे। आप बोल रहे हो भाभी जी क्या है, क्या बोले आप पहले? गुजराती आती है क्या, भोजपुरी आती है क्या? नहीं मुझे गुजराती नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती है। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ी आती है, हिंदी आती है और टूटी फूटी इंग्लिश आती है बस। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। आप कहाँ से हो? राधे राधे। अच्छा आप बताए थे ना हम यूपी से। हाँ तो आप यूपी से हो तो आपको क्या, क्या बोले अभी आप? हाँ भोजपुरी आती है आपको, गुजराती आती है आपको? राधे राधे। राधे राधे भैया। अच्छा आपकी शादी ला कितना साल हो गए? मोर शादी ला भैया 13 साल हो गए। मुझे भोजपुरी गुजराती मराठी तीनों लैंग्वेज आती है। अच्छा तो फिर बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है आपको तीनों लैंग्वेज आती है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे सिखा देना ठीक है। इतना आता है, क्या बोलते हैं गुजराती में, केम छो? आगे बोलो आप। इतना ही आता है। राधे राधे। राधे राधे भैया। हाँ केम छो मजा में। हाँ इतना आता है, पढ़ने भी आता है, बोलने भी आता है और समझ में भी आता है। मोर शादी ला 6 साल हो गए।
एक बेटी है। अच्छा 6 साल बस होए नहीं भाई मोर शादी रहा तो 13 साल हो गए, 14 साल होने वाला है। 13 साल हो गए हैं। और 2 बच्चा भी है मोर, तो एक बड़ी वाली जो गुड़िया है वो 13 साल की ही है वह। 13 नहीं 12 साल के। और जो लड़का है तेरा 8 साल के। मुझे नेपाली भी आती है। अच्छा फिर तो और भी अच्छी बात है, नेपाली आती है आपको। चलो कोई बात नहीं, आपके साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगी। राधे राधे, राधे राधे भैया। अच्छा नेपाली थोड़ा थोड़ा, बाकी गुजराती मराठी ये सब बिल्कुल अच्छे से। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सीख लेंगे हम भी। अच्छा 19 29 साल की उम्र में शादी हुई से। अच्छा। राधे राधे, राधे राधे भैया। और प्रॉपर वही रहते हो ना टिल्डा नेवरा में। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। नेवरा तुलसी में। अच्छा। मैं पूछी हूँ भैया आपसे कि आप राजिम जानते हो कि नहीं जानो करके, राजिम ला नया पारा राजिम। आप कहाँ से हो? अच्छा अब भी याद आ रहा है। मैं कहाँ से हूँ? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ भाई। यादव भाई साहब, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। नौ दुर्गा में और क्या क्या प्रोग्राम होता है आपके वहाँ पर? नौ दुर्गा में इधर भैया बहुत मतलब एकदम हमारे इधर तो बहुत रौनक है भिलाई में, सही बता रही हूँ तो। और शहर में आप सब जानते ही हो कि गरबा वगैरह आजकल का बहुत ये हो गया ना, तो जगह जगह पे गरबा। लेकिन सबसे अच्छा लगता है जो सेवा चलता है ना, सेवा आप लोग क्या बोलते हो उसको, जो माता रानी का गाना बजते रहता है ना, सब लोग मिल के गाते नहीं हैं, वो अच्छा लगता है। हाँ सेवा करना, हाँ। हमें क्या जस होता है यस बोलते हैं उनको हम लोग, हाँ वही बोल रही हूँ, जस वगैरह जो बोलते हैं ना, जस गीत। नहीं जस गीत तो अलग होता है इधर हमारे साइड, लेकिन वही है जो आप बोल रहे हो वो। अच्छा आप कितने साल के हो? भाई इधर साल वाल मत बनो।
आपको पता नहीं है क्या? पूछा नहीं जाता है। अब ये देख लो, मेरी 12 साल की बेटी है। हमारी नौ दुर्गा में दशहरे पर भजन होता है, भजन प्रतियोगिता होती है। अच्छा। हाँ, इधर हमारे घर के पास में ही होता है भैया। अभी जिस दिन नवरात्रि होगी ना, जगराता कहते हैं, हाँ उसको जगराता कहते हैं। हमारे घर के पास में ही होता है। जैसे नवरात्रि को नवमी के दिन वो होता है ना, दुर्गा विसर्जन, फिर उसके बाद में दशहरा। तो घर के पास ही मनाते हैं दशहरा हमारे, मेला लगता है। राधे राधे। सॉरी सिस्टर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो मैं सबको बता ही देती हूँ। राधे राधे। बस इतना मत बोलना कि बुढ़ी हो गई हो करके, भाई अभी बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। हमारे इधर इस टाइम पर रामलीला हो रही है। अच्छा, रामलीला है। आई। हर साल होता है। ढूंढ के ऊपर रामलीला होती है। ढूंढ के ऊपर मतलब? हमारे साइड ना भैया, अब तो खैर इधर होता नहीं है ना, अब ना जाते नहीं हैं हम लोग देखने के लिए। लेकिन जब हम छोटे थे ना, तो छोटे छोटे थे तब, जब दुर्गा माता बैठती थी ना, तो उस समय सेवा जो होता है ना, उसमें कई लेडीज लोग ना ऐसे बाल फैला फैला के नाचते थे। तो हम लोग बोलते थे इसके ऊपर माता आ गई है, माता आ गई है, ऐसे करके डरते थे उस समय बहुत। लेकिन मुझको हमारे इधर के भजन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, नहीं जाता हूँ मैं, नहीं सुनता हूँ। अच्छा, अब जाते नहीं हो, सुनते भी नहीं हो? अच्छा, नहीं सुनते हैं। अच्छा। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मेरा फेवरेट है। क्या कर रहे हो आप तुम लोग क्या है, क्या है, क्या है? पहले तो हम बहुत खेलते थे, अभी तो इधर नहीं खेलते, पर पहले हम खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते। अभी इधर कुछ नहीं खेलते, बस घर घर किचन किचन खेलते हैं। आप घर के गर्जना हो? बुद्धवी बुद्धवी कौन बोल रहा है? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा है भैया, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, आप घर के गार्जियन हो, बुड्ढी कौन बोल रहा है? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। जब अभी कीर्तन अभी सुनना है तो उत्तर प्रदेश की सुनिए, क्रांतिमाला जी की। इधर आप भी सुनती होगी उत्तर प्रदेश की जवानी कीर्तन। कानपुर साथ होती है, कानपुर से है कांतिमाला। अच्छा। अच्छा, कौन बोल रहा है? नहीं, मैं बोल रही भाई, बोलना नहीं करके आप लोगों को। वो बहुत ही अच्छे गाने कीर्तन गाती है। लालीपुरी दर्शन दर्शाती है, लीलापुरी दर्शाती है। अच्छा। क्रांतिमाला कई पंडाल नहीं है, बहुत से मंगल है जी उनके इधर।
लेकिन उधर से सभी पंडाल बहुत अच्छे गाते हैं। पंडा बहुत अच्छा गाते हैं, पंडा है ना। आप लोग कितने भाई बहन हो? अच्छा, हम लोग कितने भाई बहन हैं भैया? हम लोग ना 3 बहन हैं और एक झन एकलौता भाई है मोर। हाँ, 3 झन बहन हैं हमन ह। त एक झन महासमुंद में के हे और एक झन ह नया पार वहाँ डोंगी डोंगी तरई है। हसदा के पास, हसदा सुने हो? अभनपुर के पास वहाँ। और मैं तीसरा बहन है यहाँ हूँ भिलाई में। राधे राधे। हरदा तो हमारे पास भी है। हरदा नहीं भैया, हसदा हसदा हमारे जिले से लगा हुआ है। अच्छा, रोनी। हाय। हेलो भैया, वेलकम है आपका। रोनी है, रौनी है, रौनी तो नहीं है। रौनी की स्पेलिंग अलग होती है। आप जो बोल रही हो वह कौन सा शहर है? हम समझ में नहीं नहीं आया। मतलब नहीं, वो जो हसदा बोली उसको बोल रही हो क्या? नहीं भैया, मैं नहीं खेलती। जी। अच्छा, वो एक मतलब शहर से लगा हुआ गांव है। अच्छा, तुम्हारा वह गांव हंसा। नहीं नहीं, मैं मेरा गांव नहीं बोली। मेरा तो यहाँ सिटी पड़ता है ना, मेरा तो घर यहाँ पे। जो मेरी छोटी सिस्टर गई है ना, मैं उनका बताइए आपको। सिस्टर नहीं, मतलब बड़ी वाली जो है उसका बताइए। मेरा फेवरेट सब्जी क्या है भैया? मोर फेवरेट सब्जी हरे का हरे कटहल सब्जी। कटहल सब्जी बहुत पसंद है। कटहल है, करेला भी है। पर करेला थोड़ा कम, पर कटहल ज़्यादा। और खट्टा भाजी, खट्टा भाजी। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ की खट्टा भाजी, चेज भाजी। ये दोनों, चेज भाजी, लाल चेज, ये दोनों बहुत पसंद है। हमारे इधर नहीं होती है। हाँ, आपने उस दिन बोला था ना भैया इसका फ़ोटो खींचना। अभी तो खैर मैं वो सब्ज़ी नहीं ली हूँ। और जिस दिन आप पूछे ना, उस दिन मैं बना के खा भी ली थी। लेकिन अभी तक खट्टा भाजी किसको बोलते हो? पालक के जैसे बताई ना, वैसे ही होता है। आपके पति मन कितने भाई हैं? ओमन है भैया, 2 भाई है। हाँ, 2 भाई है, 2 बहन है। तो दोनों के शादी हो गए, बहन के भी और भाई के भी, दोनों के शादी हो गए। आप जिस रोज खरीद के लाओगे उस रोज हमारे पास फोटो भेजना। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। मम्मी आपको बेटा मार रहा है।
राधे 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 राधे। राधे राधे भैया। आपकी बातें हमको अच्छी लगी इसीलिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ। आंटी जी। ओए आंटी जी, आप सबका कमेंट पढ़ती हो। जय माता दी। अच्छा ओके ठीक है भैया आंटी जी, ठीक है कोई बात नहीं। ओके ओके ठीक है। आपकी फेवरेट मूवी क्या है? मेरा फेवरेट मूवी क्या है? बहुत सारा है फेवरेट मूवी तो। ऐसे एक क्या बताऊँ। राधे 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 भैया। अभी मैं आप लोगों का कमेंट छोड़ के पहले इनसे पूछती हूँ भाई यादव जी से। कहाँ है ये यादव भैया? कहाँ है? आप पहले बताओ आप कुछ बच्चे हो या कौन हो? मुझे आंटी जी बोल के जा रहे हो, ठीक है। हेलो कैसी हो? प्रशांत, मैं अच्छी हूँ प्रशांत, वेलकम है आपका। राधे राधे। मैं शेयर कर दिन याद करना है आपको। ओ, अच्छी बात है। राधे राधे। अच्छा अभी आ गया, सॉरी भाभी जी। नाम है भाई, मेरा नाम है। आप लोग सरिता बोल सकते हो, नाम से बोलो। ये भाई कौन हो प्रशांत भाई साहब आप? आई एम 25। अच्छा 25 ईयर के हो आप? जैसे तुम 25 ईयर के हो कि तो मैं क्या 50 की हूँ? हम्म। आपने हमको पहचाना नहीं? नहीं भाई मैं नहीं पहचानी किसी को। झूठ मत बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ये तो मुझे पता है, नाम पढ़ के मुझे समझ में आ गया आप वही हो।
मैंने कल भी आपसे बोला ना, मैं यहाँ पे कोई अपना प्रश्न नंबर बाँटने नहीं बैठी हूँ भई, आप लोग कैसे ऐसे बात करते हो इधर आके? नो व्हाट आई से भाभी और आंटी सॉरी बट लिसन। ओके, ओके। प्रशांत, मैंने कल भी आपको बोला है, ठीक है? इस तरीके की बातें आप ना यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं करना। आई डोंट नो योर एज। अच्छा, अच्छी बात है।